Hello student, I am Nisha Sharma. I am teaching you science class 10th and today we are begin with chapter 6 life processes. Life, as you know about the life, what is actually mean of life? Means life it recommend organism. How the organism is formed or the structure of the organism's body. The organisms is generally formed by a structural and functional unit that is called cell. When the clusters of cell formed, it is generally called as tissue. The specialized tissues means the special tissues means heart tissues, lungs tissues, or hand means there are actually the several types of tissues, the special types of tissues, clear? Or we say that the group of cell it forms the tissue, it help in performing a special task in our body. The different kinds of tissue together with it forms organ. Several organ together with it form organ system, and several organ system forms a life or a organism or a body. Is it clear? We studied about the life processes, means the process which involve to maintain and growth of an organism or a life. I told you here how the life is formed. Life is formed by a structural and functional unit that is called cell. We generally say that a basic unit of life, the structural and functional unit of life, life is generally recommended as organism. So the main thing is cell. Cell is a basic unit of life. The group of cell it form tissue, the special kinds of tissue or specialized tissues. The several tissues it form the organs. Several organ it form the organ system, and several organ system it forms a body or organisms. Means such processes which help to maintain a life, that processes are generally called as life processes. The processes it means there are actually such a system which are helpful to survive a life. That processes are generally called as life processes. Maintain the system, it help to maintain the life. Maintain the life. Again I told you life processes means the process or such system which helpful for maintaining or maintenance of a life. These systems are generally called as life processes. Which type of system and what is help in maintaining means help in growth and development. The process which help to maintain the life, which type of maintenance, growth and development. But what are these processes, what are these system which help to maintain? For example, when we are doing such task just like walking, reading, exercise, etc., our body it required actually energy.
Actually, a living organism's body, it require energy. Before it, I told you what is the mean of living. Living. Make a differentiate between living, non-living. You all know very well about the living and non-living. Living means growth is possible. Non-growth, ग्रोथ नहीं होती है लिविंग में, सॉरी नॉन लिविंग में. इफ इट इज लिविंग, डेवलपमेंट इज पॉसिबल. नो डेवलपमेंट इज पॉसिबल. टिश्यूज repaired when it ruptured. Tissue not repaired. Growth is possible if it is living. Growth is not possible. Non-growth. Non-growth is only in non-living organism. Development is possible if it is living organism. Development is absent in non-living organism. Body tissue will be repaired if it is ruptured. Body tissue not repaired means ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नॉन लिविंग के पास नहीं होती है. मूवमेंट इज पॉसिबल means if it is living, these are actually the motile. Movable tissues are possible. Motile means जो मूव कर सकते. मूवमेंट इज पॉसिबल इन लिविंग, ग्रोथ इज पॉसिबल इन लिविंग, डेवलपमेंट इज पॉसिबल, रिपेयरिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज इज पॉसिबल. बट इन नॉन लिविंग, growth is absent, development is absent, no repair of body tissue, no movement, non-motile. Is it clear? So I told you that for existence of life, there are such system or process it helpful, and for maintenance means for the growth and development of body, our body it required energy. And how do we obtain energy? Energy is obtained by food as organic substance or organic food, or we say organic molecule. It is organic substance, or we say that carbon based food. Carbon based food, for example, carbohydrate. Our body it required food. Which type of food it required? Our body it required organic food to maintenance of our life. The organic food is generally carbon based food. Carbon based food, it means carbohydrate. It means our body it getting food as a form of carbohydrate, and this food it giving energy to our body. It means if we getting the food outside from body, and it help to maintain our body. It means maintenance कैसे? By giving energy. That process is generally called as nutrition. Nutrition means intake of food. हमारे बॉडी को एनर्जी के रिक्वायरमेंट है, और हम जो फूड है उसको आउटसाइड यानी एनवायरनमेंट से हम उसको ले रहे हैं. कौन सी फॉर्म में हम लेते हैं? इंडिविजुअल जनरली जो फूड है वो कार्बन बेस्ड फूड या एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं, जो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं इसको, जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, उसके डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रिशन, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलेगी? एनर्जी. ये जो फूड जो हम ले रहे हैं, न्यूट्रिशन मीन्स इंटेक ऑफ फूड. ठीक है.
अब उस फूड के साथ में होता क्या है, दिस फूड इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, breaking down of food. Breaking down, how it's possible, means such chemical reactions are there by oxidation and reduction, means such chemical reactions involved to breaking down food. Which type of chemical reaction? Oxidation and reduction. When the food is breaking down, it gives energy to body. But how this food is breaking down, means this food it require oxygen. I told you that for the maintenance of a life, energy is required, and we obtain energy by intake of food. And if we intake the food, that process is generally called as nutrition. When we intake food or by nutrition process, our body it getting energy. But how it's possible? And I told you that by breaking down of food. How the food is breaking down? By such chemical reaction, oxidation and reduction. But it require actually addition of oxygen or removal of oxygen. That time we say it is oxidation and reduction. Oxidation, addition of oxygen. Reduction, removal of oxygen. Means the oxygen is required. Means when food is breaking down, it required energy, and energy enter in our body by another process that is called respiration. The another process that is called respiration. Body required energy, we intake food, that process is called nutrition. For breaking down of food, the body it required oxygen. For the oxidation and reduction chemical process, it is possible only by a process that is called respiration. In respiration process, generally we say that exchanges of gases, it means the breaking down of food by the addition of oxygen. The both process means nutrition and respiration, it helpful in growth and development of the body. Clear? Means the two process that we studied, nutrition second, respiration no, nutrition intaking of food, respiration exchanges of gases, means food plus oxygen. Nutrition and respiration, both it helpful in growth of a life and development of life. Both nutrition and respiration it helpful in growth and development. But this not only these two processes it help to growth and development. हमने फूड बॉडी में लिया, वो बॉडी में कहीं एक जगह है, रेस्पिरेशन किया जिसमें ऑक्सीजन ने उस फूड को ब्रेकिंग डाउन किया. अब उस फूड को मीन्स ये जो फूड है, मीन्स फूड कैसा है, कॉम्प्लेक्स. उस फूड कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करने का काम है वो किसने किया, ऑक्सीजन ने, जिससे वो कैसा फूड हो गया, सिंपलेस्ट या सिंपलर था, कैसा कॉम्प्लेक्स फूड. ऑक्सीजन ने उसको ब्रेक किया तो किस में कन्वर्ट हुआ, सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ. अब इन सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल को रिक्वायरमेंट किसको है, एक ऑर्गेनिज्म को या फिर एक लाइफ को रिक्वायरमेंट है. और जो एक लाइफ या ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर कई सारी सेल है, मीन्स वो मल्टी सेलुलर है, यानी बॉडी के सभी पार्ट्स में या फिर सारी सेल को ना ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है किसकी, फूड की और ऑक्सीजन की.
तो ये जो फूड है ना, उसको कहाँ पर जाना है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में या सारे ही सेल में, फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बॉडी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तो उन सिंपलर फूड मॉलिक्यूल को सेल टू सेल ले जाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अ सिस्टम which help to taken away the food to the other parts of body. Again I told you what is the mean of transportation. A system which help to taken away the food to other parts of the body, that is called transportation. It means the first one is nutrition, second one is respiration, and third one is transportation. Clear? But during the transportation, again such chemical reaction, it forms such useless substance. It forms such useless substance, and these useless substances are generally called as waste. Clear? During transportation, again there are such chemical process and it form such useless substance, and these useless substances are generally called as waste. And our body, it require to removal of this waste from the body. It require removal of waste. Removal of waste outside the body, and it is helpful by a process. That process is called excretion. रिक्वायरमेंट किसकी, वेस्ट जो बॉडी में जनरेट हो रहा है, जो बन रहा है, जो कि कैसा है, एक यूजलेस सब्सटेंस है जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, उसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। मीन्स जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो यूजलेस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है, और उस समय हमारी जो बॉडी की जो सेल्स है उनको उन वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करने की रिक्वायरमेंट होती है, उनको बाहर निकालना पड़ता है, जिसके लिए एक प्रोसेस है जो इन वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कराने में हेल्प करता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। मीन्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लाइफ, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ there are actually the 4 processes. These are called nutrition, respiration, transportation and excretion. In nutrition process we intake food. The respiration, in this process we inhale O2 and exhale CO2. The transportation, it help to transport the food. Which type of food? Simpler food molecule to whole body, means cell to cell. This system, it help to transport this food molecule, and such useless substances are formed in our body. These are waste, and the excretion, it is a process which help in removal of waste from the body. So these are the 4 system or 4 processes which are helpful in maintenance of a life. That's why these are generally called as life processes. The processes are nutrition, respiration, transportation and excretion, and these 4 processes we studied in chapter 6 life processes. अब आप ये कहोगे कि मैडम सिर्फ ये 4 ही प्रोसेस थोड़ी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इनके अलावा भी तो 2 और सिस्टम भी तो है। मैंने अभी आपको बताया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन,
excretion. जनरली ये क्या करते हैं, हेल्प कर रहे हैं किसमें, ग्रोथ ऑफ अ लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लाइफ. These are helpful in growth and development. Such other processes are reproduction, and stimulation. Nutrition, respiration, transportation, excretion, and such other processes which also helpful for a life. These are called the reproduction, stimulation. Stimulation means respond to stimuli. रेस्पॉन्स, हमारी बॉडी को रेस्पॉन्स प्रोवाइड करना, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी को रेस्पॉन्सेस देता है, हॉट, कोल्ड, लाइक दिस, है ना. रेस्पॉन्सेस, है ना, सीन का रेस्पॉन्स देना मीन्स विजन का रेस्पॉन्स देना, हियरिंग का रेस्पॉन्स देना. तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्टिमुलेशन. और उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, नर्वस सिस्टम. मीन्स रिप्रोडक्शन एंड नर्वस, और इट इज़ कॉल्ड द स्टिमुलेशन. ये भी ऐसे प्रोसेस हैं जो किसी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट कराते हैं, है ना. रिप्रोडक्शन जो है वो अपनी स्पीसीज के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, अपनी स्पीसीज को एनवायरनमेंट में उसके मतलब स्पीसीज का नंबर बनाए रखने के लिए, तो कहीं पर भी वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए, ख़त्म नहीं हो जाए. तो रिप्रोडक्शन तो सिर्फ हेल्प करता है किसमें, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइफ. अपनी स्पीसीज को मेंटेन कराता है. रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस, है ना, फिर से नई नई स्पीसीज बनना, यानी कि अपनी जो स्पीसीज है ना, उसको मेंटेन या उसके एग्जिस्टेंस के लिए जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. और एक ऐसा सिस्टम जो हमें एटमॉस्फेयर के साथ में रेस्पॉन्सेस प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेशन और नर्वस सिस्टम. तो ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं है, है ना. ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये हेल्पफुल नहीं है. तो इसलिए किसी भी लाइफ के मेंटेनेंस के लिए जो एसेंशियल प्रोसेस है वो हो जाएंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, reproduction and nervous system, that we studied later in next chapter. So in this chapter we actually study about these 4 processes and you read from here and this. The first this part, it introduced about the processes that we studied in this chapter. Now first we start nutrition.